And now I'm going to explain you the solution that we have built for the problem statement that you have given. Your problem statement was that you want a software that can build personalized diet chart considering both your modern nutritional science and as well as the Ayurvedic science. So like this is the solution that we have built for the problem statement. So this is the code and all. Let me explain you the front end. So it's an Ayurvedic assistant. Here you can do complete patient analysis plus get the diet chart for the patient. Plus also you can generate the recipes for the food items which have been suggested by the our model. And you can also do the analysis of herbs based on its Ayurvedic characteristics. Let me take you to everything one by one. So to add new patient, you need to click on this add new patient button. You need to enter the patient details. Once you click on the create patient, patient details get saved in the database that we have connected for this. So these are some of the patients I have already created. So let's do analysis of these patients like one by one. Suppose I want to create diet chart. So I'll click on create diet chart. The model asks me to select one of the patient or add new patient. Let me select the patient Ayushi. So first our model will display what are the details of the patient. These all things I have already uh, stored in our database, my database. So if I want to generate the diet plan, I'll click on this button, generate diet plan. During this time, what happens is our AI model analyzes the information of the patient and selects out the food items from the graph database, considering the Ayurvedic science, like Ayurveda rules. Like if it is very aggravated, so she needs to the patient Ayushi, she needs to eat food which can lower down her pith. So these are the so first what is displayed. There's a complete patient profile for Ayushi. Now let us look at the Ayurvedic approach, like what are the approaches which our model has used to suggest the diet. So this is the diet plan which is suggested by our model for the breakfast, for lunch, for evening, and finally for the dinner. So these food items, along with that, our model is giving like complete information of the nutrients which are contained in my model, like calories, carbs, proteins. Also, it is displaying out the Ayurvedic characteristics of a particular food item, like ras, and why it has suggested this. Like you need to eat mild butter. Like if you look at the sheath, Veer characteristic of this food item, it is sheath cooling effect for body heat. So the patient already had body heat. To solve that, uh, the food item which is suggested by our model uh, has Veer equal to sheath. So now let us look at the daily nutritional summary. So this is the summary given by model for the food items suggested, and these are complete micronutrients as well as the macronutrients present in the food items. So there are some of the dietary guidelines given by our models for a particular patient, breakfast timings and what kind of water she needs to drink. And there are some of the recommended herbs like she can use which would benefit her. There are some of the lifestyle tips like she already had health concern like abdominal gas. To solve that, there are some of the yoga asanas suggested as per Ayurveda. So there our model even suggests the yoga asanas like for morning, for evening, and like oil massage, sleep schedule. If this schedule is followed by Ayushi, she would benefit a lot as per Ayurvedic science. So these are the details. You can download the diet plan, complete diet plan for a particular patient. Like I'm downloading for the Ayushi. So you can get the complete diet plan for a particular patient in the downloaded form. Now let us go back to the front end. Also, if you want to know how you will be preparing out this food item, you need the patient might not know like how to prepare this food item. So there is a complete recipe generation feature in our model. Like if you click on get recipes, you'll get a complete recipe for the food items which is suggested by my model. Like if you see for the breakfast, what ingredients do you need and what is the method to build to prepare this food item, like stepwise it is given in this. And how the recipe is being generated. For to generate recipe, what we are doing, we have done prompt tuning. Like we are actually calling out an LLM, and we are feeding out these details, what food item we have to prepare according to Ayurveda science, and the LLM returns out the recipe in a structured format, uh, and that you can download as
download by clicking on this button. And also, while suggesting these food items or the meal plan for a particular patient, we are also considering the patient detail. While taking out the patient details, we are taking the location as well as the region, also the season, uh, also the current season. So we are actually considering all of these factors while suggesting food items to a particular patient. Now let us go to another feature. Like if you want to see patient details of the saved patient, you can click on this button. From here you also get the option to edit the patient details. Like if you want to edit a patient, you click on this button, you can this change this what score and all. Once you save changes, these changes will be reflected back in our database. Now let's go to the another feature. Like you can do the patient analysis. To get the patient analysis, you need to click here. You get the patient analysis tab. Once you click on patient analysis, a model asks you to select a particular patient or add new patient. If you want to add new patient, you can click on this button, save its details. So let me show you for any saved patient. Like for we are gonna do the patient analysis for Ayushi. So in the patient analysis, what we are actually doing, we are actually analyzing the patient's details, like the Ayurvedic details, like what, pith, and cough, and we are actually giving the information to the patient, like what does all of these things suggest, like what does all of these values mean, like what is the meaning of pith. It represents fire plus water, and when you it is balanced, so you'll have good digestion. When it is aggravated, you might feel acidity. When, in Ayushi's case, what it is little bit aggravated, so it is showing that she might face mild acidity, occasionally irritability, and all of these. So every characteristic which are like what, pith, and cough, all of the reasons for these particular things are being shown by our model in the analysis. So even in the analysis, you can see all of these details. So there are some of the health concerns that she might face. All of these things are shown. You can also download the analysis report for a particular patient. Now let's go to one of the another feature of model is Herb Wiki. You can search for any particular herbs based on its characteristics. So suppose these are the herbs already stored. If you want to filter out, if you want to search any herbs based on a particular characteristics, like suppose let me select some of the characteristics over here. I am selecting any of the random characteristics like quality, if I want like lagu quality, and then like for Veer, I might select Sheet Veer. For Ritu, I might go to Grishma. For health conscience, let me select. So like if you look at these all details have these all filters have applied over here, and these are the herbs which are suggested based on these filters. So I have not selected like Vipak. If I want to, if I put on full filters, so I might found any perfect match. Like if I put this Vipak as Madhur, and suppose any health concern as digestive issue. So there's like one of the herbs which has all of these characteristics. So if any perfect match is found, it shows the herbs, and you can click here for the details of this particular herb. So these are the details of this particular herb. Suppose if you remove this, there are two herbs which are satisfying the particular filter condition. So this is a complete solution for your models. Also, like a doctor can log in. There is a functionality for doctors to log in, and authentication is done using JWT authentication. Like he can view his own profile, edit his own details. There's a settings page for him. He can sign out. He can view all of his patients. Click on My Patients tab. So these are the features that we are providing. This is the solution, complete solution we are providing to the problem statement that you have given to us. तो अब हम लोग ग्राफ टीवी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो स्पेसिफिकली हमने हरिताकी के ऊपर बनाया है सबसे पहले, जो हम ग्राफ टीवी बना रहे हैं. तो इसके अंदर हमने सारी मैपिंग की है फिग्मा के ऊपर, आप देख सकते हैं. ये इसकी पूरी मैपिंग्स है इतनी बड़ी. तो मैं बेसिकली आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हमने क्या किया है.
तो हमने भाव प्रकाश से जो टेक्स्ट है उसको हमने पूरा एक्सट्रैक्ट किया था, जितनी भी निघट्टू होती हैं आयुर्वेद में, जैसे कि भाव प्रकाश निघट्टू, राज निघट्टू, कायदेव निघट्टू और बहुत सारी होती हैं। हमने उसे करके टेक्स्ट निकाला और उसका हम फिर मैपिंग कर रहे हैं। तो हमने स्पेसिफिकली अभी हमने सारे कैटेगरीज हो गई, नोट्स, एजेस, रिलेशंस, ये सब निकाले हैं। फिर उसमें मैप की कि एक हब के लिए कौन कौन से रिलेशंस होने चाहिए, और जो एक एक नोड है वो बाकी सब हब से भी मैच होगा, तो मिलके बहुत बड़ा कंपोजिट ग्राफ बन जाएगा। मतलब एक दूसरे सारे रिलेशंस मैप हो रहे होंगे, जिससे कि ग्राफ भी बहुत अच्छी सर्च कर पाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि जो हरिता की हर्ब है, कैटेगरी हर्ब है, नेम हरिता की है। अब इसके अंदर जो रस है, रस कौन से, मधुर, कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल, तो इसमें 5 रस होते हैं। फिर वीर्य कौन सा, उष्ण, विपाक है, मधुर, ठीक है। मधुर रस था तो विपाक भी एक रस ही होता है, तो दोनों मैच हो गए, और इसमें रस और विपाक दोनों इसकी कैटेगरी है। ऐसी फिर दोष है, दोष कौन कौन से होते हैं, वात, पित्त, कफ। अब ये क्या करती है, तीनों को पैसिफाई करती है, तीनों दोष त्रिदोष नाशक है। फिर ऐसे ही हमारे गुण हो गए, रसायन मतलब व्याधि, बुढ़ापे की व्याधि मारने वाला, मेधा शक्ति बढ़ाता है मतलब कि बुद्धि बढ़ाता है, अग्निदीपक भूख बढ़ाता है, रूक्ष है, लघु मतलब पचने में हल्का, नेत्रों के हितकार, आयुवर्धक है, अनुलोमन, बृहण मतलब शरीर भरने वाला। तो ऐसे इसके सब कुछ गुण है हब के। फिर इसके बाद आ जाएगा, हमने लिखा प्रयोग। अब देखो प्रयोग में क्या क्या, चबाकर, मतलब इसे कैसे कैसे प्रयोग हो सकता है। मेथड है, मतलब मेथड क्या, चबाकर, उबाल कर, भून कर। अब उबाल कर में हैज़ इफेक्ट, मल रोकती है, मतलब क्या करती है, उबाल कर खाएंगे। ऐसे बाकी सब में भी मैप होता है, हमने एक आइडिएशन के लिए दिखाया है कि कैसा कैसे इसकी मैपिंग्स होंगी। ऐसी सब मैथड है, शिला पर पीस कर। फिर टाइमिंग के हिसाब से भी है, खाने के साथ खाया जाएगा तो क्या होगा, खाने के बाद खाया जाएगा तो क्या होगा, खाने के पहले, खाने के बीच में से 12 प्रकार की टाइमिंग्स होती है आयुर्वेद में, द्रव्य गुण रसाशास्त्र के अनुसार। उस हिसाब से हमने मैप किया है। फिर कंपाउंड के हिसाब से, जैसे सेंधा नमक प्लस हरड़, गुड़ प्लस हरड़, मिश्री प्लस हरड़, घृत प्लस हरड़। तो अब इससे क्या होगा, ये मैप हरड़ से भी मैप है, मतलब ये कंपाउंड हरड़ से भी मैप है और ये सेंधा नमक से भी मैप रहेगा। तो जो भी इन सब के कंपाउंड्स होंगे वो सब आपस में हम लोग सर्च कर पाएंगे कि सेंधा नमक के कितने कंपाउंड्स बन रहे हैं, हरड़ के कितने कंपाउंड्स बन रहे हैं। इससे सर्च बहुत ईजी हो जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कंपाउंड है, इस बेनिफिशियल है इफ़ ईटन इन, तो कौन सी ऋतु में खाया जाए तो अच्छा रहेगा। मानसून में खाया जाएगा तो रासायनिक इफेक्ट दिखाएगा, रासायनिक इफेक्ट दिखाएगा, तो मैप हो गया सीधा। तो कौन कौन सी ऋतु में क्या क्या चीज़, कौन कौन से कंपाउंड खाए जाएंगे तो अपना अपना इफेक्ट दिखाएंगे, ये यहाँ पे मैप किया है। ऐसी बाकी सबका भी मैप होगा। अब जैसे कि पार्ट्स हैं, एक हब में कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे ट्री है, बार्क है, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ट्री की हाइट है, उसका अपीयरेंस हो गया सबका। अब बार्क है, उसकी कलर हो गया, ऐसी लीव्स में कितनी लीव्स हैं, फ्लावर्स में क्या स्मेल आती है, फ्रूट में क्या टेस्ट है। फिर फ्रूट का पार्ट भी है, जैसे गुठली हो गया, उसका छिक्कल हो गया, उसका रेशियो हो गया, ऐसे करके पार्ट्स भी तो वो भी मैप करेंगे, उनका भी रस बताएंगे कि अम्ल वगैरह क्या है। और ये एक्सटेंड होगा फर्दर, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ये सबने एक नॉर्मल एक चीज़ एक्सप्लेनेशन दिया है बस। फिर इसके बाद आ जाता है कि हाँ हरितकी के 7 प्रकार भी थे, जैसे कि अमृता, जीवंती, क्योंकि पूतना, रोहिणी, क्योंकि क्या होता है हब्स के टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि हरड़ है, उसके 7 प्रकार हो गए। ऐसे ही पुनर्नवा के 2 होते हैं, श्वेत और रक्त पुनर्नवा। ऐसे ही फिर और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि निशोत हो गई, वो भी काली और सफ़ेद होती है। अरुसा के तो 4 प्रकार होते हैं, कनेर के भी 4 प्रकार होते हैं, और अकौआ के 2 प्रकार होते हैं, लाल और श्वेत। तो ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको मैप किया है। फिर उसके बाद कुछ औषधि किस किस के योग्य हैं, किस किस को योग्य नहीं, जैसे हमने अयोग्य करके लिखा है। अयोग्य है ये औषधि किसके लिए, जिसका पित्त बढ़ा, क्योंकि उष्ण होती है, पित्त बढ़ाएगी, इसलिए अयोग्य है। उपवास किया हुआ, सूखा रूखा, मतलब कृष इंसान मतलब पतला इंसान, जिसका वीकनेस हो, चलने से थका हुआ, गर्भवती महिला, जिसका खून निकाला गया हो, मतलब कि रक्त मोक्षण जिसका किया गया हो, उसको अयोग्य हरितकी खाने के। अयोग्य व्यक्तियों का भी निर्देश इसमें दिया गया है ग्राफ में। उसके बाद हमने स्टेज बेस्ड डिफरेंसेस भी लिखे हैं, मतलब कि एक जो हर्ब है वो कितना है, जैसे कि वो राइपन्ड है, मतलब कि पूरी पकी हुई है, कच्ची है, या फिर मध्य अवस्था में है। तीनों में से जो भी अवस्था है उस हिसाब से उसकी रस भी बदल जाते हैं, क्योंकि कच्चे में थोड़ा कड़वापन होगा, पके में आते थे थोड़ा कचैलापन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे करते करते रसों का अंतर आता है, उसके हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती है, उसके सारे गुण बदल जाएंगे। तो उस हिसाब से फिर अलग मैपिंग वापस से होगी उन सब चीज़ों की। तो ये भी है, जितना जितना किताबों में दिया हमने सब मैप किया है। फिर वाटर कंटेंट के हिसाब से भी होता है कि अगर वो गीली है मतलब ताज़ी है तो कैसा है, और हमने उसको धूप में जाके सुखा दिया तो फिर अब उसके क्या है, तो उसमें वाटर कंटेंट कम हो जाएगा। जो भी वीर्य है, शीत से उष्ण भी हो जाता है कभी कभार वीर्य सुखाने के बाद। तो ये सब चीज़ें हमें कंसिडर करनी पड़ती हैं, क्योंकि वीर्य लगभग ज़्यादा चेंज होते हैं इन सब चीज़ों में वाटर कंटेंट बेसिस पे। फिर हमने लोकेशन भी मैप किए हैं कि कहाँ कहाँ पे मिलेगा, जैसे काबुल में मिलेगी, मालाबार में मिलेगी, हिमालय रीजन, विंध्यांचल, कोंकण, मद्रास, ब्रह्मा,
आसाम, बंगाल। अब जैसे कि बंगाल है, तो अब इसमें हम जैसे सर्च करेंगे ग्राफ में बंगाल में कौन कौन सी हर्ब्स मिलती है, तो हमें सारी की सारी हर्ब्स पता चल जाएंगी बंगाल में कौन सी है। तो अभी एक हब का मैप हुआ है, लेकिन ऐसे हज़ारों हब्स के मैप होंगे इन सब नोट्स के साथ, अलग अलग नोट्स के साथ। ऐसी लैंग्वेजेस भी लिखी हैं कि हिंदी में कौन क्या क्या बोलते हैं हरिताकी को, संस्कृत में क्या क्या बोलते हैं, कन्नड़ में क्या क्या बोलते हैं, और फिर बाकी सब लैंग्वेजेस से भी मैप होगा। तो हम पता लगा सकते हैं संस्कृत में कौन कौन से हब्स को क्या क्या बोला जाता है, फिर संस्कृत में कौन कौन से सब सारे हब्स के नाम हैं, ऐसे करके पूरी मैपिंग हो जाएगी। फिर ये है कैटेगरी रोग क्योर्स, क्या क्या कौन कौन से रोग क्योर करती है। यकृत हो गया, मतलब लिवर की जो भी बीमारी होती है उसको सही करती है। शूल मतलब कि दर्द को सही करती है। प्रमेह को सही करती है। कामला, पांडु, बवासीर, कांस मतलब कि टीबी, कांस मतलब खांसी, श्वास मतलब टीबी, हृदय रोग को सही करती है। पांडु, कृमि मतलब कीड़े का नाश करती है। मूत्रघात, ऐसे गृहिणी रोग करके बहुत सारे इसमें जो भी नाश करती है वो इसमें मैप किए गए कौन कौन से रोग का नाश करती है। फिर इसके बाद इसके बाद हमने ये भी मैप किया कि जैसे कि कोई हब होती है, तो बहुत बार क्या होता है कि उसके बहुत सारी स्पीशीज़ होती है हब की। जैसे कि कोई हब है और हमें बाकी कोई हब हो गई वो भी उसकी जैसी दिख रही हैं आसपास की, या फिर कभी क्या होता है कोई हब नहीं मिलती है हमें, लेकिन उसकी प्रतिनिधि औषधियाँ होती हैं जो कि उसके रिप्लेसमेंट में यूज़ करी जा सकती है सब्स्टिट्यूशन में, तो वो भी हमें मैप करनी पड़ती हैं। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि कोई औषधि है वो रेयर है बहुत ज़्यादा, वो मिल नहीं पा रही है, तो उसकी जगह हम लोग दूसरी औषधि का भी उपयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमने मैप की हुई हैं। कन्फ्यूजिंग स्पीशीज़ भी होती हैं, मतलब कि एक हब है उसके दूसरी स्पीशीज़ कन्फ्यूज़ हो रही हैं, वो भी हमने मैप किया कि कौन कौन सी स्पीशीज़ से कन्फ्यूज़ हो सकता है। भाव प्रकाश में दिया रहता है कि बहुत लोग इस जड़ी बूटी के नाम पे ये वाली जड़ी बूटी का उपयोग करते हैं, लेकिन ये वाली जड़ी बूटी मानी गई है आयुर्वेद में। तो ऐसे करके भी हैं, और सबके वो सब तो आएगा ही, सारे गुण, दोष, वीर्य, विपाक, रस, प्रभाव, ये सब तो आएगा ही। और साथ में इन सबकी एक्सप्लेनेशंस भी रहेंगी, जो कि संस्कृत के श्लोक हो गए और टेक्स्ट के जो रेफरेंसेस हो गए वो वेक्टर डीबी से लिए जाएंगे, या फिर इसमें भी हम लोग स्टोर करेंगे। ये सब चीज़ें भी साथ में रहेंगी। तो ये सब इसकी मैपिंग है, जैसे फ्रूट्स में मात्रा वगैरह कितनी है, कितना लेना चाहिए, ये सब इसमें मैप है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ग्राफ डीबी।